Thank you, Poonam ji. मेरा सबको नमस्कार. I hope you can see my screen. जी perfect. जी. All right. तो आज हम धम्मपद का चैप्टर 15 शुरू करेंगे. इसका नाम है सुखवग्ग. Basically, from what I have seen so far, it deals with happiness in the world and going beyond. So we'll see that most of the kathas are in this theme. तो आज हम 3 वर्सेस ले रहे हैं इकट्ठे, क्योंकि इन तीनों की एक कॉमन स्टोरी है. कंटेक्स्ट इसका ये है कि एज वी नो कपिलवस्तु वाज अ टाउन ऑफ साकियंस और कोलिया टाउन ऑफ कोलियंस थी, और दोनों ही रिलेटेड थे आपस में. एंड दे वर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर, रोहिणी रिवर. दोनों रोहिणी रिवर के दो साइड में बसे हुए थे. The cultivators of both towns worked the fields watered by the Rohini river. So उनके सारे fields में पानी रोहिणी river से ही आता था. One year they had scanty rain and the paddy and other crops began to shrivel up. तो एक साल जैसे कि अक्सर होता है, बारिश बहुत कम आई और दोनों तरफ की क्रॉप्स जो हैं वो काफ़ी सूख सी गई. Cultivators on both sides wanted to divert the water from the Rohini river to their own fields. दोनों चाहते थे कि उनके फील्ड्स हरे भरे हैं, इसलिए दोनों पानी उधर ले जाना चाहते थे रिवर का. एंड बोथ साइड्स वांटेड द वाटर फॉर देयर ओन यूज ओनली, क्योंकि पानी कम था, वो चाहते थे कि सारा पानी हम ले लें. एक दोनों साइड ऐसे चाहती थी. देयर वाज मच इल विल बिटवीन देम ड्यू टू अब्यूजिव लैंग्वेज एंड एक्यूजेशंस ऑन बोथ साइड्स. तो काफ़ी भला बुरा बोल रहे थे, एक दूसरे को एक्यूज कर रहे थे. And the quarrel that started between the cultivators came to the ears of the ministers concerned and eventually to their respective rulers, and both sides prepared to go to war. तो ये छोटा सा झगड़ा जो शुरू हुआ था कल्टीवेटर्स के बीच में, किसानों के बीच, वो मिनिस्टर्स तक, मंत्रियों तक पहुंचा और फिर रूलर्स तक पहुंचा और ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो गई और वो एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे. भगवान बुद्ध, surveying the world, saw his relatives on both sides of the river coming out to meet in battle and he decided to stop them. तो उन्होंने जब देखा कि ऐसा होने जा रहा है, उन्होंने निश्चय किया कि वो इनको रोकने का प्रयत्न करेंगे. So he went to them through the sky and stopped immediately about the middle of the river. वो आकाश के रास्ते से वहाँ गए जहाँ सब इकट्ठे हुए थे और स्काई में ही ऊपर. He stopped in the middle of the river. His relatives, seeing him majestic and peaceful, sitting above them in the sky, hid aside all their weapons and paid obeisance to the Buddha. जब दोनों तरफ के रिश्तेदारों ने उनको देखा, इतनी मेजेस्टिक और पीसफुल फिगर को उनके सामने, उनके ऊपर बैठी हुई थी आसमान में, उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र छुपा लिए और उनको नमस्कार किया. So then he admonished them that if they fought, their blood would flow like a river. उसने उनको, भगवान ने उनको समझाया कि अगर उन्होंने आपस में लड़ाई की तो उनका दोनों तरफ का जो खून है, जो कि एक ही खून है in some sense, would flow like a river. Instead of hating enemies, they should work together to live harmoniously. Instead of living with moral defilements, they should strive to be free from them. Instead of striving for sensual pleasures, they should rise above them. और इसी कंटेक्स्ट में ये 3 वर्स बोले गए, जिनका कलेक्टिव नाम है न्याति कलह वूप समन वत्थु.
So I'll come to the verses now. Susukhang vat jivam verinesu averino verinesu manusesu vihiram averino susukhang vat jivam aturesu anatura aturesu manusesu vihiram anatura susukhang vat jivam ussukesu anusuka Ussukesu manusesu vihrama anusukha. इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार है, सुसुखम बत जीवान, happy indeed we live happily, very neso, very no, friendly amongst the hostile, very nesu manusesu, amidst hostile men, vihram averino, we dwell free from hatred. इसी तरह से बाकी दो वर्सेस का भी ट्रांसलेशन है, हैप्पी इंडीड वी लिव, फ्रेंडली एमिड्स एफ्लिक्टेड. आतुर का मीनिंग यहाँ एफ्लिक्शन से है, बट यहाँ मोरल एफ्लिक्शन की बात हो रही है, क्रेविंग की बात हो रही है. एमिड्स एफ्लिक्टेड मैन वी ड्वेल फ्री फ्रॉम एफ्लिक्शन. हैप्पी इंडीड वी लिव फ्री फ्रॉम एवरिस amidst the avaricious man we dwell free from avarice. So basically जो मैंने ऊपर स्टोरी में पढ़ा था वही यहाँ पे वर्सेस में यहाँ पे आपके सामने है. मैं अजान मनिंदो की ट्रांसलेशन भी लिखी है मैंने यहाँ पर, which is not literally line by line but more or less is on the same lines here. While in the midst of those who hate, to dwell free from hating is happiness indeed. While in the midst of those who are troubled, to dwell free from trouble is happiness indeed. While in the midst of those who are greedy, to dwell free from greed is happiness indeed. So if any of you has any comment on any of the gathas or the meanings, we can wait for a couple of minutes for you to have a quick look at it. All right, we proceed further. So I have tried to think of some thoughts as to what these three verses mean to me. And I have given one unified reflection. And then we'll find that Ajahn Munindo has given independent reflections on each of these verses. We'll also look at them. So the thought that occurred to me was that humans as social groups are beset with contentions that create traits like hostility and other afflictions of various kinds. जो हम मनुष्य लोग हैं, in social groups we generally encounter contentions. किसी ना किसी प्रकार पे हमारी बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और उससे हॉस्टिलिटी बढ़ती है और तरह तरह की एफ्लिक्शंस पैदा हो जाती हैं, डिफिकल्टीज पैदा हो जाती हैं. That is because the pure nature of the mind is long lost into the abyss of dark forces of ignorance. और ये बेसिकली इसीलिए होता है कि हम हमारे जो मन हैं, हमारे हार्ट्स हैं, वो बहुत समय से डार्क फोर्सेस ऑफ इग्नोरेंस के, अविद्या के खाइयों में भटक रहे हैं. Even if we consider only the present birth, our bringing up generally is in an environment of fear, where we are taught to constantly guard against greed and cunningness of others, rather than looking into our own heart for the fear that we have allowed to take hold there. और अगर हम अपने इस जीवन काल को ही ले लें तो हम शायद ये पाएंगे, शायद हर पर्सन के लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा,
और एक जनरल पिक्चर अगर देखी जाए तो ये शायद कहना गलत नहीं होगा कि जनरली वी आर being brought up as children, as even as we grow up in an environment of fear. Or fear basically is as a caution, as a reflective mechanism to guard against दूसरों के लालच, दूसरों की चालाकी के अगेंस्ट. हम ये नहीं सोचते कि हमारे अपने दिल में क्या हो रहा है, अपने हार्ट में क्या हो रहा है, और अपने दिल में बिना बात पे समटाइम्स फियर को पैदा होने दे रहे हैं और वहाँ पे अपनी जगह बनाने दे रहे हैं. So this part of reflection is essentially motivated by the fact that the two sides were really on a fighting mode. और इसीलिए मैं fear, basically have brought the fear factor because typically in any kind of contention, there is some kind of hidden fear behind. And that's basically the theme I have picked up. Although fear is considered to be a primordial emotion, जो कि हमारी शायद जन्म से ही हमारे अंदर होती है. Much of the fear we experience may be a figment of our own imagination. लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे डर जो हम अपने मन में बिठा लेते हैं वो सिर्फ हमारा इमेजिनेशन ही होता है. Our conditioning allows us to create प्रपंच around any thoughts of fear. और हमारा जो माइंड है, हमारी जो कंडीशनिंग है, वो इस फियर के प्रपंच को बढ़ाने में मदद करती है. Fear for our own welfare or for our families and our communities. अपने लिए, अपनी families के लिए और अपनी communities के लिए. And the fear feeds upon itself in this manner. We can see this happening even in households. हर घर में कभी कभी हमें ये देखने को मिल जाता है किसी ना किसी फॉर्म में. कभी कभी it is a fear for our children's future that can sometimes create irrational attitudes for the bringing up of children. कभी कभी ये बच्चों के लिए हो जाता है कि हमें उनको ठीक से बड़ा करना है, पालना पोसना है और उनको सही रास्ता दिखाना है. लेकिन फियर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो irrational attitudes हो जाती हैं, creating very difficult complexes in the children's mind. And the results are usually disastrous. And as we saw in this story, deadly wars also come about this way. तो fear के कई नतीजे हैं जो कि obviously not very desirable. If on the other hand, if you look at Dhamma, what Dhamma teaches us about fear or about any emotion for that matter, you can see that hollowness of this fear and its impersonal, non-substantive nature. It becomes easy for us to reduce its hold over us. अगर हम अपने जो हम धम्म सीखते हैं तो उसको ठीक से देखेंगे तो हमें एकदम क्लियरली स्पष्ट दिखाई देगा कि ये सब एक इम्पर्सनल, नॉन सब्सटेंटिव इमोशन है. और अगर हम उसको इस तरह से देखेंगे तो इसका जो होल्ड है हमारे ऊपर वो कम हो जाएगा. The key principle that always works is not to dwell on it, but to examine whenever you experience it. So basic principle ये है कि उसके हम बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करें, उसको देखें जब वो आए और उसको एक्सपीरियंस करें और उसको एग्जामिन करें. If by so doing we can see through the nature of fear, tendencies of contention and hostility are reduced. अगर हम ठीक से ये कर पाए और उसको लेट को होने दें तो हमारी जो hostility, contentions की tendencies हैं वो कम हो जाती हैं. Our ability to live harmoniously increases and our acquisition of unwholesome and selfish desires also come down. Feelings of welfare receive an impetus. So basically, letting go is a solution. तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक से हो जाती हैं. Feelings of welfare मन में आ जाती हैं. So further, Bhagwan has said elsewhere, when passion, hatred, delusion are abandoned, one's inclinations are not for one's own harm, not for the harm of another, nor for the harm of both, and one does not experience in one's mind suffering and grief. In this way, Nibbana is directly visible, immediate, inviting one to come and see,
worthy of application to be experienced and experienced individually by the wise. ये जो हम हर रोज धम्मा की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, बेसिकली फिर हमें वो इन्विटेशन मिलता है when we are able to set aside, let go of passion, hatred, and delusion, which is what this verse is also asking us to do. So these were some thoughts that I had put slightly longish, perhaps, but that's what I came up with. We'll also briefly go through Ajahn Manindo's reflections on these three verses. But before that, if you have any comments, if you would like to offer anything, please feel free. Fear will result into So, delusion. that's it. Ji Poonam ji? Is fear results into delusion, na? And delusion will make conflict will arise out of that delusion. Actually, everything arises from delusion, because ignorance or avidya is the root cause of everything. Even the three basic emotions of basic defilements of greed, hatred, and delusion, they also arise from delusion. So avidya is the creator, and avidya is also one of the results. And then all emotions arise from these defilements, one or the other. It can arise from anyone, I think. I'm not so sure about the generative aspects of how fear, but fear is actually primordial in some sense. ये हमारे जन्म के साथ ही होता है. In some sense, some basic amount of fear is a requirement for even living, perhaps. We have to be afraid of things so that we can protect ourselves. वो basic emotion तो होती ही है, लेकिन it gets enhanced if you are in a constant environment of protecting ourselves from the greed of others and cunningness. That's how we are taught. Yeah, जब कि उसका भाई अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे. सही रूप में नहीं देखा जाएगा तो फियर इज मतलब वो नेगेटिव इसमें आ जाएगा, लेकिन फियर एज सच मतलब उसको पॉजिटिव लेने की बात नहीं है. इट हैज अ एलिमेंट ऑफ यू एज अ ह्यूमन प्रोटेक्ट, मतलब वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बिल्कुल, वो तो है ही. बिकॉज़ ऑफ फियर, बट वो जो In fact, एक्सटेंशन every emotion probably has a value in that sense. There is a value in every emotion, but then if you dwell on it too much, that's where the problem starts to arise. If you convert that into a prapancha of some kind, and which is what often happens, the mind dwells on it, keeps brooding over it, creates stories around it, and that's where the problems start to arise. All right, let me go to Ajahn Manindo's reflection. So on the verse 197, where the focus is on living peacefully, free from hating amongst people who are hating, it's a very interesting reflection he makes. He says it takes a certain sort of strength to not be pulled into the moods of those around us. Part of us possibly wants to feel included in the group, to not stand out as different. So अगर कुछ ग्रुप में हम अपने आप को किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट करते हैं, उसे बिलोंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी हम फील हो कि हमें वो ग्रुप हमारे बारे में सोचता है, हमें इंक्लूड करता है हर चीज़ में. But when our sense of well-being is defined by whether we are included or excluded by others, we are perpetually vulnerable. तो ये जो इंक्लूजन वाला जो काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट है हमारा, कि हम
हम एक्सक्लूड ना हो जाएं ग्रुप से, वो अच्छा है, बट इफ इट लीड्स टू ए वल्नरेबिलिटी ऑफ सम काइंड, कि भाई वो हमें बाहर रखेंगे तो हम, या हम उनसे बाहर रहेंगे तो बाहर हो जाएंगे, एक तरह का जो डर है, तो वो makes us a little vulnerable. So although feeling excluded can produce a sense of suffering, और you'll suffer, कि लगता है कि बाकी लोग हमारे बारे में सोचते नहीं है, हमारी केयर नहीं करते. It is suffering that we can learn from. There are two types of suffering, that which leads to more suffering and that which leads to freedom from suffering. So meaning obvious है कि suffering हमें या तो सही रास्ता दिखा सकती है, या फिर हमें और दुख में ले जा सकती है. If you are willing to endure the suffering which arises from being excluded by others who are caught in hatred, in gossiping, or in greed, then that is the sort of suffering that leads to happiness. So I think basically the theme here is to live peacefully without hating while all around you are submerged in hate. So that is roughly the theme that is this reflection here. In the next verse, where the focus is on affliction. So here Ajahn Minindo says, when those around us are struggling, we might feel that somehow it is not quite right to be happy. अगर बाकी सब लोग खुश नहीं हैं, तो क्या हमें खुश होना चाहिए उनके बीच? That is the theme that Ajahn Minindo has taken here. The Buddha tells us the opposite. कहते हैं ऐसा नहीं है. An external display of excessive delight would be out of place, but maintaining inner joy is perfectly suitable. अगर हमारे आसपास सब लोग दुखी हो रहे हों, तो certainly expression of excessive delight of any kind would be out of place. वो तो सही बात है. लेकिन अंदर ही अंदर inner joy maintain करना is actually a very good thing. Basically, that's what he's saying. In fact, to do so might be the very best thing we could offer to a troubled situation. क्योंकि आपकी inner joy transmit हो जाएगी बाकी लोगों की तरह. और ट्रांसमिट हो सकती है, not necessarily, but हो सकती है. You can make things better because of the fact that you are not affected by the affliction that other people are going through. I think this is worth thinking about particularly in reference to the kind of situations we had during COVID. I'm not sure whether that is a right example, but just occurred to me as I'm presenting it to you. So maybe worth thinking about that. तीसरा रिफ्लेक्शन उनका जो है, उसमें वो कह रहे हैं, to have empathy does not denote merging with the moods of those around us. तो ये more or less similar statement है जो पहली रिफ्लेक्शन में थी इनकी. Putting it another way, abiding with sensitive equanimity while others get upset doesn't mean we are cold-hearted. अगर हम इक्वेनिमिटी में रह सकते हैं जब बाकी लोग अपसेट हो रहे हैं, equanimity does not mean that you are indifferent, you are cold-hearted. It could appear so, which is why it is skillful to remember sensitivity. So when we are trying to be equanimous, or when we are equanimous, it is not that we are insensitive to what is happening around us. When we are with those who are troubled, we need to be both sensitive while keeping our equanimity. I think that's the point that is being made here. At the time, our companions might want us to join them in their suffering, but in the long run, keeping our head clear and our heart open is the greater good. So I think
this is something that we can all appreciate, because equanimity से ही हम अपना, अगर हम समता बनाए रखेंगे, तो there is a possibility that we can put the situation, make the situation better, help others also. तो ये अजान मिनिंदो की reflections थी. So this is what I have planned for today's presentations. If there is, अगर आप में से कोई भी किसी भी एस्पेक्ट पे कुछ टिप्पणी करना चाहे या अपनी कोई रिफ्लेक्शन रखना चाहे, प्लीज यू वेलकम टू इंटरव्यू. आती जी, आपका म्यूट है शायद. मुझे कुछ कहना नहीं. थैंक यू. आई थिंक भारती शर्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन वो म्यूट पे हैं. भारती मैम, मे बी आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया होगा, वो चेक कर लीजिएगा एक बार. She's शायद saying, आपका ऑडियो एक्टिव नहीं है. Surendra Prasad ji, she's saying, please carry on. Maybe some. अच्छा, ठीक है. अगर किसी और की कोई टिप्पणी हो तो ठीक है, नहीं तो we can stop here. All right, thank you very much for your patient listening. Thank you. Thank you, Surendra ji. सर, एक छोटा सा थॉट था. जैसे जी. इसमें भगवान बुद्ध ने दो क्लैन के बीच में लड़ाई को रोका. जी. पहले मेरे दिमाग में आया कि महाभारत युद्ध में दो क्लैन में लड़ाई हुआ, और उसमें शायद इसीलिए हुआ था क्योंकि दूसरी क्लैन ने बोल दिया था कि हम 5 गांव भी नहीं देंगे, या सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देंगे. जी. दैट्स व्हाई शायद वहां पर भगवान कृष्ण नहीं रोक पाए. जी. तो विचार क्या है इस वर्ष के कॉन्टेक्स्ट में? कुछ विचार नहीं है सर, बस यही पॉपअप हुआ मेरे दिमाग में. दैट जी. आई मीन वही है कि हमें शक्तिशाली होना चाहिए, राइट. भगवान बुद्ध भी शक्तिशाली थे, और वी शुड बी एबल टू डू द त्याग कर देना चाहिए, लेकिन शक्ति भी होनी चाहिए. अगर कोई इस तरह से बिल्कुल ही गलत करे, है ना, तो ऐसा मेरे को थॉट आया. मतलब वी शुड नॉट बी वेरी स्पाइनलेस, ऐसा मेरे को लग रहा है. बट आई मीन हु डिफाइंस दैट लिमिट कि कहाँ पर स्टैंड ले लेना है, बहुत टफ होता है. एंड द मोर थिंग इज कि स्टैंड लेने से पहले अपने अंदर पार होनी चाहिए. भगवान बुद्ध इतने सक्षम है और फिर भी वो सब छोड़ के बैठे हैं. तो ये सब मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं. वो एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है. So if we can have inner strength and then we can be calm, that is wonderful. अगर कुछ कर ही नहीं सकते तो शांति बैठेंगे. नहीं, लेकिन वो शांत होने के लिए तो नहीं बोल रहे निखिल जी. वो कह रहे कि amidst of greedy you should not dwell in greed. So मतलब आप जरूर नहीं है बाकी सब जो जैसे चल रहे हैं उनके हिसाब से आप चलोगे.
मतलब सब लोगों ने एक व्यू ले लिया जो ग्रीड वाला है, सो और हम भी उसी तरह से ले लें। आई मीन दैट्स व्हाट आई कैन सी कि अभी एक हाँ साल नहीं, वो एक्चुअली वो जो आपने वर्सेस बोले वो तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो तो मतलब मैं पर्सनली काफी एक्सपीरियंस करता हूँ जब मैं पुल आता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको उस तरीके से उन्हीं की उसमें लग जाओ, और वो ये वर्सेस काफी हेल्पफुल है उस समय। लेकिन जो कहानी थी इसमें भगवान बुद्ध आए, उन्होंने दोनों को समझाया एंड वो समझ गए होपफुली, तो वो मुझे अलग थॉट आया उस समय। अच्छा। ये दो वर्सेस बहुत ही हेल्पफुल है। ये वर्सेस बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो पुल बहुत ज्यादा होता है कि ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सब लोग जो कर रहे हैं उसको कर लो। दैट आई हैव फेस्ड। थैंक यू। Thank you, Nikhil, for your observations. I think all your observations are very correct, but probably जो पहली वाली observation है, मुझे उनका inverses से ज़्यादा context शायद मिला नहीं. But otherwise, what you're saying is true, that obviously while you should do all these things, you can't be a doormat to any kind of wrongs that are being done, etc. वो तो है, लेकिन उसको कैसे डील करना उस सिचुएशन को in the Dhamma context is something that is worth reflecting on. Yes, sir. You put it rightly. Yeah. True. True. मुझे लगता है कि आप जब तक कॉन्फ्लिक्ट में कोई थर्ड पर्सन को जो कि बिल्कुल डिस्पैशनेट हो विदाउट एनी ग्रीड, आप जब मैं एक नॉर्मल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में भी देखती हूँ तो दो पार्टीज होती है और एक एडवोकेट के पास आते हैं या फिर एक जज के पास जाते हैं जो बिल्कुल ही उस आपकी एंगल को जरूरत है, मैंने कहा आपकी जरूरत पड़ती है। हाँ मतलब वही मैं कह रही हूँ कि चाहे वो एक थर्ड पार्टी है जो विदाउट एनी ग्रीड हेट्रेड, सो कॉन्फ्लिक्ट्स में भी जहां पर आप बिल्कुल एनवेलप रहेंगे ग्रीड हेट्रेड और डिल्यूजन से, उससे निकलने के लिए यू नीड टू सी थर्ड व्यू, एंड दैट थर्ड व्यू इज गिवन बाय सम अदर पर्सन, मे बी डिफरेंट लेवल। चाहे मुझे नहीं मालूम महाभारत वाला जो आप बता रहे हैं, मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं ये जो स्टोरी है उससे तो कि भाई ही अपीयर्ड एंड चलिए वो थोड़ा सा वो लगा कि वो आकाश से आए और उन्होंने किया, लेकिन मतलब दैट थर्ड व्यू हैज गिवन बाय बुद्धा एंड दैट इज अ न्यू पर्सपेक्टिव टू सी देयर कॉन्फ्लिक्ट। आई मीन दैट्स हाउ आई सी। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज इट इज बिकॉज बोथ साइड रिस्पेक्टेड भगवान बुद्ध that they listen to him. Otherwise, शायद कोई और चाहता तो they won't have bothered. But I think बिल्कुल सही है. Unless there is a reason for people to listen to reason, they will not even listen to reason. Because they had faith and they had respect for Bhagwan, they listened to him. And they also knew that he's not really for speaking for any one party. He's speaking in a dispassionate person, as a dispassionate person. Sure, what you're saying is perfectly right. प्रसाद जी, मैं भी कुछ कहना चाह रहा था। जी सर। वो ऐसा है कि जो निखिल ने एग्जाम्पल भारत का लिया, तो उस जैसे यहाँ पे तो जी भगवान बुद्ध ने इंटरवीन किया तो पार्टीज ने समझ लिया, बट देयर व्हेन लॉर्ड कृष्णा इंटरवीन एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन टू कौरवास, जैसे उन्होंने बताया कि भैया 5 विलेज ही दे दो, अगर कुछ नहीं देना चाहते हो, 5 विलेज नहीं देते हो तो कुछ और छोटी सी चीज दे दो, and he refused to give anything, and then ultimately he wanted to chain Lord Krishna himself. दुर्योधन ने उनको जंजीर से बांधने की कोशिश की. It is there then the udghosh happened and Lord Krishna said that now it is enough. You have crossed the line of that line which I had drawn for you to understand, and so then so here I see that on the one side
Bhagavan Buddha could intervene and could convince both the parties. But here, Lord Krishna was confronted with the people. And now you can relate it in your own life also, that there are things which happen at times, which go beyond reasoning. You might be able to explain, you might have a lot of patience also, but ultimately it does not yield any result. And so there is bound to be a confrontation. And one has to be prepared for it. Like we can see China and India is, for example, today. You have an adversary who is not understanding, who is not listening, who is not ready to understand the logic behind things, then that leads to conflict. That is the reason why I think I brought the fear element in the reflection, but probably I overdid that a little bit. Main theme is not really the fear, but the fact is that there would be situations where people around us would have extensive emotions of various kinds. So can we be equanimous in those situations? I think this is what Bhagavan Buddha is trying to tell us here. That's my understanding. Yes, all those examples that you are all talking about they stand in their own context, but I think in the present context, I still don't see their relevance. Thanks, sir. So we can stop. Yeah, we can stop here, I think. Yeah, thank you, Surendra ji. So अब हम थोड़ी देर शांत बैठ सकते हैं और हम 6:55 तक आज शांत बैठेंगे. Thank you.